fact, Times Now has visited a Hindu village in Murshidabad that has now been left deserted. The village is eerily silent with locked houses, empty streets following the recent wave of violence. Take a look at this ground report. मुर्शिदाबाद के जाफराबाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे किस तरह से एक के बाद एक इस गांव में जो हिंदू परिवार के घरों पर ताले लगे हैं, और वो इसलिए क्योंकि शुक्रवार के बाद जब शनिवार को भी हिंसा हुई तो उनकी प्राथमिकता बस यही थी कि किस तरह से अपनी जान बचाएं, किस तरह से दंगाई का एकमात्र मोटिव था और वो था कि पहले लूट मचाई जाए और उसके बाद जो है इस हमले को इस तरह से अंजाम दे कि किसी को लगे कि यहाँ पर कोई अटैक हुआ है। आप देखिए इस अलमारी के जो है निशान आपको साफ जाहिर करेंगे कि किस तरह से लॉकर को तोड़ा गया। यहाँ पर जो सोना ज्वेलरी जो कुछ उनको मिला, जो यहाँ पर सब कुछ उनका लूट लिया गया। जितना भी सामान यहाँ पर था वो लूटने के बाद इन्होंने आगजनी की, ट्रंक से लेकर वार्डरोब तक और अलमारी से लेकर यहाँ पर जितने भी शेल्स है सबको आग के हवाले कर दिया। और कहा यह भी जा रहा है जो इस परिवार के जो परिजन है वो कहीं दूर चले गए हैं, लेकिन यहाँ उनका कहना है कि ये खिड़की से कई ऐसे बॉम्ब हैं, देसी बॉम्ब को जो है चार्ज किया गया, इसलिए ये पूरा कमरा जो है जलकर खाक हो गया है। इसके बाद इस पूरे घर को आप देखिए यहाँ पर तांडव मचाया गया है। आप देखिए हर वो चीज जो है तोड़ी फोड़ी नष्ट कर दी गई है। So you saw the ground report. Families have been forced to flee because of the violence. In fact, over the last 24 hours, Times Now has spoken to several of these families, men, women, children, who said that they are scared. Many women said that they even received rape threats. And they said that the violence was such, with people even knocking on their doors when they were inside their homes, that they don't know where to go. They were scared and they were looking at the government for any help, but that never came about. In fact, when Times Now's crew visited the spot, we found multiple residents of Murshidabad heading to different parts of the state. The TMC, though, has downplayed the situation. The TMC believes that claims of exodus are being falsely peddled. It's being peddled by the BJP, and that all communities continue to live very happily in harmony in Murshidabad. BJP is a third-class party. They can only talk in communal terms. In Murshidabad, both the Hindus and Muslims are for TMC. There is no fleeing from the area. If there is trouble at any spot, the local administration will take adequate steps. We cannot let the peace in Murshidabad be disturbed by outside forces. Izzada's claim is all false. Temporarily something may have happened. In Murshidabad, Hindus and Muslims have always lived in peace. Nothing will be disturbed. রাজনীতি আমি এখন সবাইকে বলবো যে রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে নিশ্চিতভাবে কিছু মানুষ আক্রান্ত হয়েছে, অন্যায় হয়েছে, মানুষের সেবায় ব্রত হওয়া, এখানে রাজনীতি করাটা ঠিক না। এখন মানুষের একটা যে যারা আক্রান্ত হয়েছেন তারা হিন্দু আছেন, মুসলমানও আছেন, সব মানুষের পাশেই মানুষের দাঁড়ানো উচিত। মানব ধর্ম তাই বলে। এখন রাজনীতি করার সময় না, পুলিশ প্রশাসন তার জায়গা ঠিক করুক। আমরা রাজ্যের প্রশাসনের উপরে বিশ্বাস রাখছি। দেখুন যারা ক্রিমিনাল তাদের কাছে তৃণমূলও নয়, সাধারণ মানুষ ক্রিমিনালকে ঠান্ডা করতে পারে পুলিশ এবং পুলিশের সেই কাজ। In fact, the residents also confronted the local police and accused the police of failing to protect the Hindus in the area. They claim that their homes were burnt and shops were torched. The West Bengal leader of opposition, Shuvendu Adhikari, while speaking exclusively to Times Now, also launched a sharp attack on the Mamata-led government. He announced that the BJP will observe April 16th as the Hindu Shahid Divas across the state to pay their tributes to the father-son duo who lost their lives in this violence. Save Hindu in Bengal from TMC. मुर्शिदाबाद में जिस तरीके से घर में घुस के हरगोविंद दास और उनका लड़का को चंदन दास को खून किया, ये लोग मौत का घात उतार दिया।
उसका खिलाफ पूरा बंगाल का हिंदू समाज गुस्सा में है. Already Chief Minister declared that her government are not accepted this Waqf Amendment Bill. She is directly threatening to the Constitution of India. इसलिए ममता बनर्जी कमेंट जो है एंटी नेशनल है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है. Meanwhile, the TMC leader Kunal Ghosh alleged a larger conspiracy behind the Murshidabad violence. He claimed that certain elements within the central agencies, a section of the BSF and members of 2 or 3 political parties were involved. According to him, with assistance from a faction of the BSF, a breach occurred at the border, allowing miscreants to enter, creating unrest and then escaping safely. He, in fact, has also called for a detailed investigation into the matter. We are receiving some inputs and allegations that there was a larger conspiracy behind those incidents. Some section of central agency, a section of BSF and a section of 2 or 3 political parties. They were involved in this conspiracy, and with the help of a part of BSF, there was a gap in border, and with the help of a section of BSF. Whether it is true or not, there is a need of proper investigation, because the local people, they are not finding any known face who are the masterminds. So there is an allegation that with the help of BSF, there is a deep-rooted conspiracy here. BJP and opposition can use those sins as their political platform, because BJP has no issue here. So the politics around it continues, but the larger question still remains on who is responsible for the violence and why is there so much politics around it instead of looking at what the situation is like on the ground.